Hello friends, in today's lecture we will discuss Heaviside expansion theorem. So this is the very important topic of inverse Laplace transform and it is the substitute of partial fraction method of inverse Laplace transform. तो जैसा कि हम लोग inverse Laplace transform में partial fraction के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सेम उसी के सब्स्टिट्यूशन में हम लोग Heaviside expansion theorem को यूज करेंगे. So let us see the statement of Heaviside expansion theorem. Given that Fs and Gs are the polynomial in S, then degree of R of S is less than the degree of Gs. If G of S equal to the number of factors S minus alpha 1, S minus alpha 2, S minus alpha n, where alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n are distinct constants, may be real or complex. Then L inverse of Fs divided by Gs becomes summation of R equal to 1 to n f of alpha r divided by G dash alpha r into e to the power alpha r t. So this is the statement of Heaviside expansion theorem. Again I repeat the statement. Given that Fs and Gs are the polynomial in S, the degree of Fs being less than the degree of Gs. If Gs has the number of factor S minus alpha 1, S minus alpha 2, up to S minus alpha n, where alpha 1 to alpha n are the distinct constant, may be real or complex, then L inverse of Fs divided by Gs equal to summation of R equal to 1 to n f of alpha r divided by G dash alpha r into e to the power alpha r t. तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम का, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है. देख लीजिए Fs डिवाइडेड बाय Gs, और जो इसका रिजल्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा summation of r equal to 1 to n f of alpha r divided by G dash alpha r into e to the power alpha r t. अब आइए इसको प्रूफ को देखते हैं. प्रूफ है ना, रिसॉल्विंग इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, सपोज दैट Fs डिवाइडेड बाय Gs, ये जो फ्रैक्शन है can be because Gs has the number of factors. So in terms of partial fraction, a1 divided by s minus alpha 1 plus a2 divided by s minus alpha 2 plus an divided by s minus alpha n. Now to compute AR, आप सपोज कीजिए मुझे AR ड्राइव करना है, a1 a2 an, तो AR ड्राइव करना है हम लोगों को. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s माइनस अल्फा r, जैसा कि हम लोग जानते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट से, जो पार्ट हमको निकालना रहता है उसी के जो डिनोमिनेटर पार्ट रहता है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी हैव हियर वी इवेल्युएट AR, that's why we multiply their factor s minus alpha r. तो मुझे AR ड्राइव करना है, इसीलिए मैंने हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है s माइनस अल्फा r से. नाउ टेकिंग द लिमिट, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही उसका लिमिटिंग पॉइंट हो जाता है. सो s टेंड्स टू अल्फा r. So finally AR equal to limit s tends to alpha r Fs divided by s minus alpha r divided by Gs. So f alpha r should be outside after substituting the limit. s के प्लेस में अगर हम लोग s tends to alpha r है, तो f of alpha r should be outside. So limit s tends to alpha r divided limit s tends to alpha r s minus alpha r divided by Gs. When we substitute the value, it becomes the 0 by 0 form. Then this part, on using the L'Hopital's rule, so s minus alpha r after differentiating it becomes 1 and Gs becomes G dash s by L'Hopital's rule. So we get f alpha r divided by G dash alpha r. Now after taking the L inverse Fs divided by Gs equal to summation of r equal to 1 to n
L inverse of A r divided by S minus alpha r. So AR equal to, AR should be outside, AR of 1 by S minus alpha r, 1 L inverse of 1 by S minus alpha r equal to, जानते हैं हम लोग कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाय S माइनस अल्फा r का जो रिजल्ट हो जाएगा बाय द एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, इट बिकम्स e to the power alpha r t and a r as it is here. So finally this part becomes summation of r equal to 1 to n f alpha r divided by g dash alpha r into e to the power alpha r t. तो क्या किए हम लोग, here we substitute the value of ar. ar का वैल्यू हम लोग ड्राइव किए थे, ar का वैल्यू जो था आपका f alpha r divided by g dash alpha r. तो यहाँ पर हम लोग ar का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए and so it becomes summation of r equal to 1 to n f alpha r divided by g dash alpha r e to the power alpha r t on putting the value of ar. This is the proof of Heaviside expansion theorem. Now अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे. So let us see the example. Apply Heaviside expansion theorem to obtain L inverse 2s square plus 5s minus 4 divided by s cube plus s square minus 2s. And another example is 3s plus 1 divided by s minus 1 of s square plus 1. Both are same. तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट प्रॉब्लम को. तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो क्या रिजल्ट दिया है, हियर न्यूमिनेटर इज 2s square plus 5s minus 4. So it is fs equal to 2s square plus 5s minus 4. And gs here, gs equal to, gs is the denominator, तो gs का जो वैल्यू दिया हुआ है वो s क्यूब प्लस s स्क्वायर माइनस 2s. फैक्टराइज कर लेंगे. आफ्टर फैक्टराइजेशन इट बिकम्स s of s minus 1 s plus 2. And after differentiation of gs becomes g dash s equal to 3s square plus 2s minus 2. And the factor constant value here, first factor is s, so alpha 1 is 0, other factor is s minus 1, so alpha 2 is 1, and third factor is s plus 2, so alpha 3 is minus 2. तो हम लोग fs का वैल्यू सबसे पहले डिसाइड कर लिए, gs डिसाइड कर लिए, gs का फैक्टर ड्राइव कर लेंगे एंड देन gs का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा एंड डिटरमाइन देयर फैक्टर्स कांस्टेंट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3. नाउ यूजिंग द एक्सपेंशन थ्योरम, हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम, therefore L inverse of 2s square plus 5s minus 4 divided by s cube plus s square minus 2s becomes f0 divided by g dash 0 into e to the power 0 t, बिकॉज अल्फा 1 t का वैल्यू जो है आपका क्या है, 0 है. और यहाँ पे अल्फा 1 का वैल्यू कितना था, 0 0. अल्फा 2, जब आप अल्फा 2 का वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, सो इट बिकम्स 1. अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, सो f1 डिवाइडेड बाई g डैश 1 e to the power 1 into t, that is t, plus the third value is f of minus 2 divided by g dash of minus 2 into e to the power minus 2. हम लोगों ने क्या किया है, अल्फा 1 का वैल्यू 1 by 1 करके पुट किए हैं, बिकॉज द रिजल्टेड वैल्यू ऑफ हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम इन टर्म्स ऑफ समेशन, दैट्स व्हाई वी टेक द प्लस साइन हियर. एक बार हम लोगों ने अल्फा 1 का वैल्यू पुट किया है, प्लस देन अल्फा 2, अल्फा 3. नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग द वैल्यू ऑफ f0 and g dash 0, it becomes minus 4 divided by minus 2 and e to the power 0 is 0, प्लस f1 डिवाइडेड बाई g डैश 1, बिकॉज हम लोग जानते हैं f1 का वैल्यू यहाँ से fs का वैल्यू जानते हैं 2s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 4. 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे f1 का वैल्यू ड्राइव हो जाएगा. एंड देन सिमिलरली g डैश 1, g डैश इज गिवन 3s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 2. ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन प्लेस ऑफ s इक्वल टू 1, we get the value of g dash 1. So it becomes 3 by 3 e to the power t, plus and similarly f of minus 2 and g dash of minus 2 is minus 6 divided by 6 e to the power minus 2t. After simplification it becomes 2 plus e to the power t minus e to the power minus 2t. So this is the result of first problem. Now the second problem. Here second problem is
L inverse of 3s plus 1 divided by s minus 1 of s square plus 1. So see here, fs is 3s plus 1, gs is s minus 1 s squared minus 1 up squared. We write down here s minus 1, s plus 1 and s plus I, s minus I. So the factor is alpha 1 is 1, alpha 2 is minus I, alpha 3 is minus plus I. Same by using the expansion theorem on substituting the value of 1 by 1, alpha 1, alpha 2, alpha 3, and we get like this f1 divided by g dash 1 e to the power t plus e to f of minus I divided by g dash of minus I e to the power minus it plus f of I divided by g dash I e to the power it. After evaluating the value of f1 divided by g dash 1, we get 4 divided by 2 and e to the power t as it is. F of minus I divided by g dash of minus I, it becomes minus 3i plus 1 divided by minus 2 plus 2t, and e to the power minus it as it is. Fi divided by g dash I is 3i plus 1 divided by minus of 2 plus 2i e to the power it as it is. After simplification, we get the final result 2 of e to the power t plus sin t minus 2t. So this is the second problem result. Now see the another example. L inverse of s plus 5 divided by s plus 1 of s square plus 1. And the next is 2s square minus 6s plus 5 divided by s cube plus s cube minus 6s squared plus 11s minus 6. So the first problem is as in previous problems. We take the next problem, second problem, 2s square minus 6x plus 5 divided by s cube minus 6s square plus 11s minus 6. तो पहला तो प्रॉब्लम एज इट इज है जैसे कि हम लोग एग्जांपल नंबर 1 में बनाए हैं, सेम उसी तरीके से बनाइएगा. इसका रिजल्ट है 2 ऑफ e टू द पावर माइनस t माइनस ऑफ 2 cos t प्लस 3 sin t. दूसरा प्रॉब्लम को देखिए. दूसरी प्रॉब्लम में यहाँ पे fs का वैल्यू जो दिया हुआ है 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5. So write down here fs equal to 2s square minus 6s plus 5. This is equation number 1, and the here denominator is s cube minus 6x square plus 11s minus 6. तो gs का वैल्यू दिए, gs को फैक्टराइज कर लेंगे. So it becomes s of s minus 1, s minus 2, s minus 3. So the number of alpha 1 is 1, alpha 2 is 2, alpha 3 is 3, and gs को डिफरेंशिएट करने के बाद g डैश s का वैल्यू जो होगा वो 3s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 11. नाउ आफ्टर यूजिंग द एक्सपेंशन थ्योरम को जब हेल्प करेंगे, सो इट बिकम्स f1 डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ 1 e टू द पावर t, f2 डिवाइडेड बाय g डैश 2 e टू द पावर 2t, f3 डिवाइडेड बाय g डैश 3 e टू द पावर 3t. अब f1 डिवाइडेड बाई जी डैश 1 का वैल्यू टाइप कर लीजिए पहले, बिकॉज पोलिनोमियल ऑफ fs और gs दिया हुआ है आपको, वहां सब्सटीट्यूट करेंगे 1 तो वैल्यू निकल जाएगा. f2 डिवाइडेड बाई जी डैश 2 एंड f3 डिवाइडेड बाई जी डैश 3. तो इस तरीके से हम लोग इवेल्युएट करेंगे, सो द आवर रिजल्ट वी गेट द फाइनल सोल्यूशन. तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल के को लेकर हम लोगों ने सॉल्व किया. सो थैंक यू. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल.